Hello students of class 9th. Till now I had taught you your voice changes, right? Now active and passive voice. Okay. Now today your active and passive voice will continue. Let's see. Let's see on page number 57, right? Till now I had taught you that what's active and passive voice. I told you before that active and passive voice. When you will change your active into passive voice, you will have to change subject into object and object into subject, right? मैंने बताया कि subject को object, object को subject में बनना change कर देते हैं. Use of verb का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एंड बी का प्रयोग करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बी, राइट? और बिफोर ऑब्जेक्ट यू विल यूज बाय. Now here on page number 57, use of active and passive voice, right? Here the active voice is used when the subject is to be made prominent, as here is saying the active voice is used when the subject is to be made prominent. For example, he told me a story, right? You will find I have already told you that there are two types of objects. Objects are two types: direct and indirect objects, right? Direct object, always you will find a thing, and indirect objects you will always find pronouns. Objects are, right? Let's see examples. Here is given: he told me a story. The passive voice is preferred to the active voice in the following cases. Here the first one, when the doer is not known, as the bell was rung, right? The bell was rung. Here doer is not known. Who is doing? Not known, right? The patient was carried home. Is it clear? But who's doing? Unable to understand. In the second, when we mean to take a greater interest in the sufferer than in the doer of the action, as the doer of the action. So some of the soldiers were killed in the battlefield, right? My pen has been stolen. But who has stolen? ये क्या है? Passive में, right? Let's see. Yes, when the subject in active voice is clear from the context, as the thief was arrested, तो क्या है? Subject's clear. The wind cannot be seen, clear. Next, some verbs are used with the help of prepositions, as कुछ वर्ब यूज होते हैं प्रीपोजिशंस की हेल्प में. फॉर एग्जाम्पल हेयर, आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल. एक्टिव है. नाउ यू विल चेंज इट इनटू पैसिव. यू विल चेंज योर प्रपोजल. योर प्रपोजल, yes, your proposal is objected to by me. Clear? You will write here योर प्रपोजल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लिया, राइट? सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो दैट्स व्हाई यू विल यूज बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर. तो हेयर प्रपोजल इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई यू विल यूज हेयर इज. योर प्रपोजल इज. एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म हो गया ऑब्जेक्टेड टू. ये प्रीपोजिशनल वर्ब इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टेड टू. बाय लगेगा. आई का ऑब्जेक्ट मी. क्लियर? सेकेंड, से इज लाफिंग एट द बैगर. द बैगर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया. द बैगर इज बीइंग. लाफिंग का आईएनजी बीइंग में चला गया और लाफ का थर्ड फॉर्म लाफ्ड हो गया. द बैगर इज बीइंग लाफ्ड एट बाय हर. क्लियर? सी का ऑब्जेक्ट हर और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया. क्लियर? नाउ सी he switched off the lights. Lights क्या? ऑब्जेक्ट को इधर ले आए. The lights were switched off by him. Clear?
Next, I know him. Him object will become subject. You will write here he. He is known to me. Sentence present tense में है, इसलिए you will use here is. Right? Next, here verbs followed by some prepositions. कुछ verb ऐसे हैं जिसमें followed by prepositions, तो उन्हें prepositional verb कहते हैं. For example, astonish, right? Astonished, you will change this. इसका होता है prepositional में astonished at, pleased with, या pleased at, satisfied with, right? Contained in, covered with, annoyed at, interested in. Clear? Next, here imperative sentences. Let's we study about the imperative sentences, how you will change the imperative sentences into active into passive, right? When you will change active sentence into passive, especially imperative sentence, first of all you will have to use here let plus object plus be plus participle, that is third form of the verb. For example is here, do it at once. कह रहा do it at once. अब it क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और imperative sentence में हमेशा subject will be hidden. Clear? तो you will write here let it be done at once. Clear? let से मैंने यूज कर लिया, it का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज कर लिया, be लगना ही लगना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, do का थर्ड फॉर्म डन हो गया. राइट? let it be done at once. Next, call the servant. Let's start here. Let the servant be called. Clear? Inform the police. Let the police be informed. Clear? जो ऊपर फार्मूला दिया है, according to the same formula you will follow this. So now here when the active voice is in the negative, जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो द पैसिव टेक्स दिस फॉर्म. द पैसिव का फॉर्म ये हो जाएगा. देख लें पैसिव का फॉर्म क्या है. हियर लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. से एग्जाम्पल, डू नॉट सेल योर वॉच. तो अब योर वॉच, तो योर वॉच को इधर, लेट योर वॉच नॉट बी सोल्ड. सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, फार्मूले के अकॉर्डिंग बी, नॉट लगेगा. राइट? लेट पहले लगेंगे, लेट के बाद आपका सब जो ऑब्जेक्ट विल बिकम योर सब्जेक्ट. क्लियर? yes, the passive form has to begin with you, right? If the object of the verb in active voice is not given, अगर active voice में object of the verb not given नहीं है तो हम इसको passive में जब imperative sentence use करेंगे तो उसमें subject use बना लेंगे. तो here for example worked hard. वर्ड हार्ड, ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो यू विल राइट हेयर यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड. क्लियर? अगर एडवाइस देगा तो एडवाइस लिखेंगे, सजेशन देगा तो सजेस्टेड लिखेंगे, ऑर्डर देगा तो ऑर्डर लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिव सेंटेंस यू विल राइट यू आर. राइट? so that's why you are saying here you will write here you are advised to work hard. आप कहते हैं गेट आउट, ऑर्डर कर रहा है ना, तो यू विल राइट हेयर you are ordered to get out. passive. Here see the use of should be. अब should be का भी use है, should be plus past participle in the following sentences. Here example for you, here saying love your country. So what you will write? You will write here your country should be loved. right? ये passive में change हुआ है, active में लिखा है love your country, तो you will change this into passive, your country should be loved. right? और या लेट योर कंट्री बी लव्ड, और लेट से भी बना सकते हैं, शुड बी से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से राइट है. लेट योर कंट्री बी लव्ड. नेक्स्ट इज सेइंग हेल्प द पुअर.
आप कह रहे हैं हेल्प द पुअर, तो इसमें यू विल राइट द पुअर शुड बी हेल्प्ड, चाहे पुअर शुड बी हेल्प, और यू कैन ऑल्सो राइट लेट द पुअर बी हेल्प, ये भी लिख सकते हैं, राइट. नाउ सी हियर इज सेइंग let's study some more examples. अब कुछ more examples you are seeing, right? The first one is, you will see here in active, see they are eating sweets. ये क्या है? एक्टिव है और किस टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव, ये सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे. यू विल राइट स्वीट्स, स्वीट्स प्लूरल है तो स्वीट्स आर. ईटिंग का BING बीइंग में चलेगा. स्वीट्स आर बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन. स्वीट्स आर बीइंग ईटन बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम, राइट. नेक्स्ट, समन द पुलिस, तो विल चेंज इट. इम्परेटिव है, लेट द पुलिस बी समन्ड. क्लियर. Someone has picked my pocket. You will write my pocket has been picked. My pocket has been picked. और यहाँ someone जो होता है, someone, no one, anyone, इसको रिमूव कर देंगे जब भी पैसिव में लिखा जाएगा, तो इसकी लिखने की नीड नहीं होगी. बट when you will change this passive into active, then you will have to use there someone, no one, people, anyone, ये सब जो hidden है उनको यूज करना पड़ेगा. Now the next, देखो people भी रिमूव कर देंगे. People love games all over the world. तो गेम्स क्या है? ऑब्जेक्ट है. गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल रिमूव कर देंगे जब, क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है. क्लियर. नंबर 5, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो, राइट. इसमें दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी है हीरो भी है. तो हिम से हम हिम को थर्ड उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम विल बिकम्स ही. तो ही वॉज कॉल्ड हीरो बाय द बॉयज. क्लियर. Number 6, bring me a glass of water. You will change. Let a glass of water be brought for me. Clear? Now the number 7, get him out. Get him out. तो इसको हम चेंज करें, him का चेंज कर ले तो बन जाएगा let him be go out. पैसे में होगा, right. Number 8, don't beat the child. Let the child not be beaten. Clear. Now number 9, what's saying? Obey your parents. You will write here, your parents should be obeyed by you. Clear. Yes. Number 10, I know you. तो you are a present definite sentence है, I know you. तो you will change, you are known to me. Clear. Number 11, there is no danger of his harming you. तो you will change this into passive. There is no danger of you being harmed by him. Clear. Now number 12, it is now time to show the seats. तो change क्या करना है? You will change this. It is now time for the seats to be shown. Clear. थोड़ा सा understand. Okay students. Now as I think this whatever I had taught you, it's clear to all of you, and very soon in the next video I will give you exercise of your book. Okay.